Hello students, I hope you're all doing well. I'm glad कि आपने जो मैंने कल लॉन्ग क्वेश्चंस पोस्ट किए थे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो आप लोगों ने देखे हैं. एंड एज आई कमिटेड टुडे आई एम discussing with you 1 mark important questions which are likely to come in exam from unit 1. So let's get started. So unit 1, the protein section. The question number 1 is what are zwitter ions? तो एक न्यूट्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं. देयर इज अ पॉजिटिव अमीनो ग्रुप एंड देयर इज अ नेगेटिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे. सो नेट चार्ज ऑन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वुड बी जीरो. सो दैट बिकम्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और जिसको हम एक डाइपोलर आयन भी कहते हैं. ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक वो स्पेसिफिक पीएच है. प्रोटीन, हर एक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक पीएच होगा. अलग अलग प्रोटीन्स का अलग अलग पीएच होगा जिस पे उस प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज जो है जीरो हो जाए. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वुड कैंसिल ईच अदर. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन एंड एवरी प्रोटीन हैज अ वेरी स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो जब प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर विच इज अ 3D स्ट्रक्चर वो डैमेज हो जाता है जिससे कि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल functioning lose कर देते हैं. And this usually happens when the proteins they are subjected to either harsh chemicals or high degrees of temperature and pH. तो उनका जो tertiary structure है वो डैमेज हो जाता है. सो वी से दैट द प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड. व्हाट आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स? तो सिंपल प्रोटीन्स व्हेन दे कंबाइन विद अ नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. एंड दैट कैन बी any lipid, carbohydrate, it can be a metal ion, it can be a pigment. So जो bonding होगी that can be either a covalent bond or a non-covalent bond से attached होंगे. So that structure is called as a conjugated protein. For example, the chromoprotein where a protein is uh, non-covalently bound with a pigment, say hemoglobin in blood. Similarly, we have rhodopsin in the retina. Then there are lipoproteins, जिसका example है egg yolk. ठीक है, albumin. So these are all conjugate proteins. Then what are derived proteins? These are the products of denaturation or partial digestion of proteins in the alimentary canal of human. Right? Like stomach के अंदर जो protein का degradation का digestion होता है. So you get smaller proteases, peptones, and peptides. So that those are called as derived proteins. Now, what are acidic proteins? These are proteins with more number of acidic amino acids. उसके अंदर देखिए एक जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है. देयर इज वन अमीनो ग्रुप एंड देयर इज वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. बट अमीनो एसिड हैविंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उसमें क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा अमीनो एसिड पे. सो सच अमीनो एसिड्स दे आर कॉल्ड एज एसिडिक amino acids or acidic proteins. So the protein which has more number of glutamic acid and aspartic acid amino acids, they will be the acidic proteins. Likewise basic proteins वो होंगे जिनमें basic amino acids का नंबर ज्यादा होगा. Now basic amino acids would be those जिसके अंदर additional amino group है. ठीक है, more than one amino group, so they will become the basic amino acids and the amino acids are lysine and arginine. तो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जब बेसिक प्रोटीन्स ज्यादा होंगे, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, तो वी से दैट इट इज अ बेसिक प्रोटीन. नेक्स्ट, व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? दिस अगेन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा सेटिंग गलत हो गई. पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड जिसमें कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडजॉइनिंग अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. एंड दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड और अ पेप्टाइड लिंकेज. Now, which type of bond stabilize the tertiary structures of protein? ये भी important है question. So there are all sorts of interactions from hydrogen bond to ionic bond to disulfide bonds अगर cysteine residues हैं, and most importantly hydrophobic interactions being the prominent ones. Now, what is a disulfide bond? This is a covalent bond formed between the sulfur atoms of two cysteine amino acid residues. Now, next,
carbohydrate section से, now what are carbohydrates? So you know carbohydrates are the hydrates of carbon, the compounds that will have carbon, hydrogen and oxygen, but then you have to write this is very important, किस ratio में ये present होंगे. So carbon to hydrogen to oxygen ratio would be 1:2:1, and the general formula is CnH2O whole air. So you have to write the formula also. This is also important. Without this, the definition is incomplete. Now, what are anomers? See, anomers are specific types of stereoisomers. जब हम साइक्लिक ओपन चेन को साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग जब एरोमेरिक कार्बन पे चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं दे आर एनोमर्स. नाउ व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? जो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट इज द एनोमेरिक कार्बन. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी हियर इन ग्लूकोज, सी दिस इज द फर्स्ट कार्बन जिसपे CHO ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज द एनोमेरिक कार्बन. नाउ जब हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, so this becomes the alpha form, and if OH group on the anomeric carbon is present on the left side, जब हम रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, OH अगर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, तो उसको हम बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं. सो दीज आर टू एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, राइट. नाउ व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिल लिंकेज क्या होता है? इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक्स मोनोसैकेराइडिक शुगर्स टुगेदर, ठीक है. एंड दिस इज अगेन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. सो इफ यू सी हियर, ये कार्बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका कार्बन 1 is making a glycosidic bond with the carbon 4 of the next monosaccharide unit. So यहाँ पर there is a loss of water. So this is this bond which is formed. This is the alpha 1,4 linkage here, जैसे maltose में भी होता है. So this is a glycosidic bond. नेक्स्ट, व्हाट आर एनांशियोमर्स? ये आप बहुत ध्यान से करके जाओगे. एनोमर्स क्या है, एनांशियोमर्स क्या है, एपिमर्स क्या है, इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है. सो एनांशियोमर्स अगेन देयर आर टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जो कि डिफर करते हैं इन हाउ दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. इफ दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट हैंड साइड, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाते हैं. इफ दे आर रोटेटिंग द लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो दे बिकम लीवो रोटेटरी, जिनको हम कैपिटल D and L से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ यू सी हियर इन दिस एग्जांपल, दीज आर D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज. ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की. दे आर सॉरी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इनैंशियोमर्स कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे. बड़ा देखकर भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे OH is on the right hand side, here OH is on the left hand side. So if you try to put one form over the other, it will not match. ठीक है. Now enantiomers में क्या है? The position of the hydroxyl group, the position of the OH group, it differs on the penultimate carbon. Now what is penultimate carbon? The last but one. आखिरी से पहला वाला कार्बन जो होता है, जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो 5वां कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट कार्बन. तो अगर पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, तो उसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे, बिकॉज इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट. सिमिलरली, अगर पेनल्टीमेट कार्बन पर 5th कार्बन लास्ट बट वन पे OH लेफ्ट साइड पे है, तो दिस विल बिकम L glucose. So these are the enantiomers of glucose. Now what are epimers? ये भी stereoisomers हैं जो कि अपने एक specific जो उनका orientation है of OH and H group that differs at different chiral carbons. Now for example, if you see here the OH and H positioning, right, and this one. These are the C2 epimers, right? If you see here, mannose का structure है D mannose का, और ये D glucose का structure है. ठीक है. D क्यों है? Because penultimate carbon पे OH इनमें सभी में right hand side में है. This is clear.
राइट, इसमें HO लिख दिया है, इसको OH लिखना चाहिए था वैसे डायग्राम में, सो देयर इज अ स्लाइट एरर हियर, बट इफ यू सी देयर C2 मतलब कार्बन 2 के ऊपर मैनोज के अंदर OH इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड ग्लूकोज के अंदर OH इज ऑन द राइट साइड, सो द HOH का जो ओरिएंटेशन है अक्रॉस कार्बन 2, ठीक है, द चिराल कार्बन 2 के ऊपर ये डिफर हो गया है, ठीक है, तो देयर इज अ stereoisomerism, there is a difference in the 3D conformation, so these are called as epimers of each other. Similarly, galactose and glucose are also epimers of each other, where if you see कार्बन 4 के ऊपर जो ओरिएंटेशन है HOH का वो डिफर हो जाता है, ठीक है, so these are epimers. Now, what is a racemic mixture? It is an equimolar mixture of two enantiomers that are non-superimposable mirror images of each other. अभी हमने लास्ट में देखा है, and they rotate equally the plane polarized light. So these are called as racemic mixtures and they are optically inactive. ठीक है? So they rotate the plane of polarized light equally in both the directions. So they are often denoted as plus minus or D or L forms. Now, what is mutarotation? Very important question. It is the gradual change in the optical rotation of a sugar solution as it interconverts between the two cyclic forms. ठीक है, जब अल्फा फॉर्म बीटा में चेंज हो जाए, बीटा डी अल्फा के अंदर चेंज हो जाए, till they attain a equilibrium position, so that is called as mutarotations, that one form will be fluctuating into the another form. For example, in case of D-glucose, there are two forms, alpha D-glucose and the beta D-glucose. ठीक है, इनके अलग अलग म्यूटारोटेशन इंडेक्सेस होते हैं when you dissolve them in water, but when they attain an equilibrium, तो जो रोटेशन का इंडेक्स जो आता है जिसके ऊपर ये स्टेबल हो जाते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन दैट कम्स टू at 52.7 degree plus 52.7 degree पे they attain an equilibrium position where both the forms will coexist in the water. Now, what are double sugars? Double sugars को हम disaccharides भी बोलते हैं. So, these are the carbohydrates where two monosaccharide units would be linked together by a glycosidic bond. Obviously, it is a dehydration reaction. For example, lactose हुआ, maltose हुआ. ठीक है, these are the examples of double sugars. Now, why sucrose is called as invert sugar? ये question मैंने यहाँ पे जरूर डाल दिया, but this can come for a short answer question also. Sucrose is called invert sugar because देखिए इसके अंदर दो sugars हैं. There is a aldose sugar which is glucose and there is a fructose sugar which is a ketonic sugar. तो इनके बीच में bonding हो रही है, right? तो जब bond बनता है तो there is a reversal or inversion in the optical rotation. So it breaks the dextrorotatory sucrose जिसका rotation index plus 66.5 degrees है into an equimolar mixture of glucose plus 52.5 degrees पे stable हो जाता है and a levorotatory fructose minus 92.4. So sucrose जब breakdown होगा, so you have get both the forms coexisting. One the glucose and the levorotatory fructose. But क्योंकि इस resulting mixture के अंदर levorotatory index of the fructose जो है, power जो fructose की levorotatory power ज्यादा है as compared to glucose. You can see minus 92.4 is much higher than plus 52.5. So it becomes invert. वो left turn कर जाता है sugar and that is why it is called as invert sugar. Now, what is a non-reducing sugar? Non-reducing sugars are the carbohydrates that cannot act as a reducing agent. ठीक है, so they will not give a reaction with the Fehling solution. They will not react with the Benedict solution. And this is because they lack a free aldehyde or ketonic group. Both the groups, they are engaged to form a glycosidic bond. ठीक है, so the anomeric carbons of both glucose and fructose, they are linked as in case of sucrose. Sucrose में दो molecules हैं, glucose और fructose. तो glucose का aldehyde group glycosidic bond बनाता है with the ketonic group of fructose. So both the functional groups, they are not free to reduce the either the Fehling solution or the Benedict solution. ठीक है, तो जो उसमें क्यूप्रिक आयन जो है वो क्यूप्रिक में कन्वर्ट नहीं होता, ब्लू कलर solution ब्लू कलर ही रह जाती है. So that is why the sucrose is called as a non-reducing sugar. Now, define osazone. Osazone formation is a chemical reaction where reducing sugars, now these are reducing sugars क्योंकि यहाँ पे functional group is free. So if the functional group, since the aldehydic group is free, so it will react with an excess of phenyl hydrazine.
एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो ओसाजोन इज स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप विद द केमिकल फिनाइल हाइड्रोजीन, तो उससे येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं जिनको हम ओसाजोन्स बोलते हैं. Now, list the bonding in cellulose, or the question can be why humans cannot digest cellulose. So, cellulose is a polysaccharide which is composed of beta T glucose monomers. ठीक है? And the bond that exists is beta 1 for glycosidic bond. So this is the bonding in cellulose. But if the question is why humans cannot digest cellulose, because in our saliva, जो salivary amylase है, that can only act on the alpha 1,4 glycosidic bonds. ठीक है, जो कि starch के अंदर bonding है. So since the saliva doesn't have beta 1,4 amylase enzyme, so it cannot digest the cellulose. Name the monosaccharide sugar present in DNA. So it is 2-deoxyribose sugar. You can make the structure also here. I missed the structure. Which sugar is called as animal starch? So it is glycogen. What are peptidoglycans? So it is a polymer of recurring units of what? N-acetyl D-glucosamine and N-acetyl muramic acid. And the bonding would be beta 1,4 linkage. So इसको हम एक word में mucopeptides भी बोलते हैं. Now coming to the lipid section, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ पे, बट लाइक व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो जो वनस्पति घी डालडा घी खाते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में इसी प्रोसेस से बनता है. ठीक है, कि लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट. हाउ? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस इन्फ्यूज की जाती है, हाइड्रोजन गैस ऐड की जाती है, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ saturated fatty acid. Now, what is rancidity? Rancidity is the spoilage of fats and oils. कैसे होता है? When they are exposed to either oxygen और उनका hydrolysis हो जाए, and so what is happening is unsaturated fatty acids, they will react either with oxygen or they react with water. ठीक है? Often these reactions are often catalyzed by light or maybe excesses of heat, and सो उससे क्या होता है, लिपिड जो है या फैट्स जो है वो खराब हो जाते हैं. दे हैव अनप्लेजेंट ओडोर, द टेस्ट में चेंज, दे हैव अ चेंज टेक्सचर. तो देखने से भी पता लग जाता है कि द ऑयल और द घी has been spoiled. Now, why the neutral fats are called as triglycerides? Because these are uncharged non-polar hydrophobic molecules formed by the esterification of one glycerol molecule with 3 fatty acids. So triglyceride, as the name suggests, so there would be 3 fatty acid chains linked with one molecule of glycerol, and the another name is neutral fat. Now, what are essential fatty acids? So they are the ones that we cannot synthesize in our body. ठीक है, and they have to be supplied through dietary sources. So examples are linoleic acid and linolenic acid. दो हैं, linoleic and linolenic. Now, what are non-essential fatty acids? They are the fats that the human body can synthesize on its own, and we do not require it through the diet. इसमें सारे आ गए examples आपके, palmitic, stearic, oleic acid, ये examples हैं. Now, what are prostaglandins? So these are hormone-like lipid compounds which are derived from arachidonic acid. So you have to remember this name, arachidonic acid से जो lipid compounds derive होते हैं, ठीक है, and they हमारी ह्यूमन बॉडी में these are actually the hormones. Prostaglandins का बड़ा important example है cortisol है, progesterone है, ठीक है. Now, what are holoenzymes? Now, enzymes action जो चैप्टर है उसमें से भी बहुत ज्यादा एक नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते, उसमें यूजुअली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ही बनते हैं. सो आई could just think of 2 or 3 questions, so I've clubbed it here only. What are holoenzymes? ये बड़ी बहुत बार पूछा गया है. So a holoenzyme is a complete enzyme that is catalytically active. ठीक है, अब जो होलो एंजाइम होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक तो उसमें एपो एंजाइम होगा जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, एंड इट विल कंबाइन विद द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट द कोफैक्टर. तो इस कोफैक्टर को हम कोएंजाइम कहते हैं, या दैट नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इट कैन आल्सो बी अ मेटल आयन. तो उससे क्या होगा, जो इनएक्टिव प्रोटीन है इनके साथ कंबाइन होने से वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा, वो एक एक्टिव प्रोटीन हो जाएगा, तो जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम. तो यहाँ पे
तीनों चीजें आ गई। आपको क्वेश्चन एपो एंजाइम भी आ सकता है। सो इट इज अ इनएक्टिव प्रोटीन विच doesn't have a catalytic function, so that is called as an apoenzyme. When it combines with a non-protein component, so it converts into a holoenzyme which is now enzymatically active. ठीक है? Now, why are enzymes called as biocatalysts? Enzymes are called biocatalysts because they are natural protein molecules produced by living organisms and inside the body क्या करते हैं? They speed up the biochemical reactions. Very important. यहाँ पे stop नहीं करना. You have to write this without being consumed or permanently altered in the process. So those are called as enzymes क्योंकि enzymes कभी भी reaction में use नहीं होती हैं. Right? So these are few questions from unit 1. Tomorrow I'll come up with the 1 mark important questions from unit 2. Till then you can revise them, study hard, take good care of your health, sleep well, stay blessed.